इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के दिल्ली स्थित मुख्यालय से आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको सभी को एक अपने विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेस के जो एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं, उन एकेडमिक प्रोग्राम्स के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देने के लिए आज यहाँ आप उपस्थित हुए हैं। और मेरे साथ हैं डॉक्टर रुचिका कुबा, जो कि हमारे स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेस की निदेशिका हैं। और आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रुचिका कुबा। और जैसे कि आप सभी को पता है, आप में से अधिकांश लोग इस बात से परिचित होंगे कि इग्नू का स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेस एक काफ़ी लंबे समय से कई समाज के कई वर्गों के लिए हेल्थ साइंसेस के क्षेत्र में एकेडमिक प्रोग्राम्स को संचालित करता रहा है। और ये एकेडमिक प्रोग्राम्स कई रोचक विषयों पर हैं, और जिनमें से हैं पीजी और एडवांस डिप्लोमा के स्तर के, ये एक वर्ष के शैक्षिक कार्यक्रम हैं। बैचलर डिग्री स्तर के शैक्षिक कार्यक्रम हैं, जो कि बीएससी नर्सिंग। इसके अलावा डिप्लोमा, सर्टिफिकेट स्तर के, डिप्लोमा स्तर के भी पाठ्यक्रम हैं, सर्टिफिकेट स्तर के भी पाठ्यक्रम हैं, और पीजी सर्टिफिकेट स्तर के भी पाठ्यक्रम हैं। यहाँ मैं आपको बता देना उचित समझता हूँ कि जो सर्टिफिकेट स्तर के जो शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं वो 6 महीने के होते हैं, जो डिप्लोमा स्तर के शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं वो 1 साल के होते हैं, और जो बैचलर स्तर के जो शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं वो हमारे 3 साल के स्तर के होते हैं। तो इन्हीं प्रोग्राम्स के बारे में विस्तार से बताने के लिए मैं डॉक्टर रुचिका कुबा को आमंत्रित करता हूँ। मैडम, इन प्रोग्राम्स के बारे में एक एक करके हमारे सभी दर्शकों को बताएं। थैंक यू। A very good afternoon to everybody, and मैं थोड़ा सा स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेस के बारे में बताऊंगी, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इम्पैक्ट है, और उसके बाद आप सब लोग क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं जानने के लिए कि कौन कौन से प्रोग्राम हैं, ये कब ऑफ़र किए जाते हैं और इनके अंदर किस तरह से ये ऑफ़र किया जाते हैं, मैं उसको आपको बताऊंगी। So, School of Health Sciences is a part of Indira Gandhi National Open University, and this is the largest university in the world. It's quite relatively a younger university because it was established by an act of parliament in 1985. And recently it has received also the A++ grade under the NAC accreditation. Mandate of the university is to offer higher education through open and distance learning, and more than 257 programs on offer with more than 3 million students. That's why you can understand कि कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, कितने सारे छात्र इसके साथ जुड़े हुए हैं. Now, if you see the administrative structure of IGNOU, there is a headquarters in New Delhi, in which we have 21 schools from where the various programs are developed and offered. To support these 21 schools, we have various divisions. For example, the student registration division, the evaluation division, the material distribution division, computer division, and so on. In the periphery, to support the student support, we also have a peripheral structure. And in the peripheral structure, we have regional centers. There are 56 regional centers and 11 special regional centers, and these regional centers basically are administrative offices of IGNOU, where most of the administration work takes place, and they connect the the practical centers, the training centers with the headquarters. The practical or the training centers, or even the counseling centers or the academic counseling centers, are located in centers which are called learner support centers, and these centers are established in colleges of nursing, colleges of medical colleges as far as School of Health Sciences is concerned. But for the other programs of IGNOU, they are housed in the general colleges for offering BA, BSc programs. In addition, we also have something called as the Skill Development Center, which we will be learning more about this once we go further in my presentation. Now, just to give you a brief overview of School of Health Sciences, the School of Health Sciences was established in 1991. It is one of the 21 schools of IGNOU. It has 2 disciplines. One is the health sciences, where the medical faculty are recruited, and the second is the nursing, where nursing faculty are recruited. The objectives of the school are basically to plan, develop, and launch doctoral, degree, diploma, and certificate level programs for various categories of health professionals, including in-service doctors and nurses. They also have a responsibility of planning, development, and offering health awareness courses for general public,
and to conduct research on health-related issues. Now, this is just a list of the programs. So you can see we have around 20 programs which we are offering since 1994 was the first program which we started offering. That was the post-basic BSc Nursing, which is a flagship program for our school since this is an INC approved program. Then we have a PhD Nursing postdoctoral program for nursing. We have 4 PG diploma programs. These are basically for doctors. Of course, the hospital and health management program is open to any graduate, but the rest of the 3 programs, that is maternal and child health, geriatric medicine and HIV medicine, are exclusively for MBBS or above qualification doctors. We have 2 diploma programs, the critical care nursing and the nursing administration, that is also specifically for nurses. We have 1 PG certificate program of medical management of CBRNE disasters. CBRNE stands for chemical, biological, radiological, nuclear and explosive disasters. So this is also exclusively for medical doctors. This is a very niche program. This has been developed in collaboration with INMAS DRDO, and it is for medical doctors, and it is restricted only for those who have got Indian citizenship. Then we have got various certificate programs. These certificate programs are open to some of them are for 10th category, class 10 minimum qualifications, some are 10+2 and some are for teachers. As we go along, I will specifically talk about the various programs and let you know what is the basic minimum eligibility for various programs. So you can see that some of them are skill-based programs like the phlebotomy assistant, geriatric care assistant. Some of them are very nice for the the general public, like yoga, first aid. Even if you are not a health professional, you can very easily take up this program and gain some competencies. Now, this School of Health Sciences has been, appreciated, and a number of organizations have come forth to use the platform of School of Health Sciences and IGNOU to offer these capacity building programs. So, these are some of the important collaborations that we have had with our school and IGNOU. One is for the PG diploma in HIV medicine. NACO had in fact approached IGNOU to come under a collaboration so that the ART centers can be strengthened and we can offer quality services to the general public. Then we have got the World Health Organization. From 2004 actually we had the signature with the WHO CRO office, in which they had approached IGNOU and they wanted to develop a program on management of healthcare waste for health professionals. This is open for anybody 10+2, but it is beneficial for those who are working in the health sector. And since 2004 till 2015, this program continued. 2016, we revised this program, and from 2018, this revised program is now on offer. And this is also open to all the Southeast Asia region countries. Then we have got another MOU which was signed with the DGHS MOHFW, basically for sponsoring the state nodal officers to be enrolled in this program so that they can further take the capacity building in their respective states. They can act as master trainers and train the district level and the medical officers lower down. Then we have got an MOU signed with MOHFW for 10 programs, certificate level programs, which are at the level of assistants. For example, the phlebotomy assistant, you saw the general duty assistant, the geriatric care assistant, and so on and so forth. And then, as I already told you, we have got an MOU signed with INMAS DRDO for developing this very important program of medical management of CBRNE disasters. Now, we also have certain organizations who have come forth for programs for BSc Nursing is the most important one. In 1994, this program was launched in collaboration with the Indian Nursing Council. It is launched in agreement with them, and all the syllabus is approved by INC, and it is also offered from INC approved centers. Then in 2016 was also a landmark date when the Ministry of Health and Family Welfare approached IGNOU to offer this program of certificate in community health. I will be talking more about this program a little later.
Now, seeing the potential of IGNOU in capacity building, especially in the health sector for the health professionals, MCI has allowed IGNOU to offer continuing medical education programs through open and distance learning. This is the contribution of under Ayushman Bharat that the MOU was signed with the MOHFW, and in which a cadre of community health officers is being prepared and produced by undergoing this program of certificate in community health program. This program is purely a sponsored program. It has been funded by MOHFW. So if you want to join this program, you will have to approach your state government and your state and national health missions to be able to enroll. And after you complete this program, there is 100% placement in the health and wellness centers. It provides a comprehensive primary healthcare needs of people in the rural areas. And IGNOU has also recognized this program by awarding it as the best program in the certificate category in 2021. Now, this is again just to show you that, what is the contribution of School of Health Sciences towards the skilling and towards capacity building of health professionals, and also, people who are interested in health programs. In this small span of 94, we launched the first program, and till today, more than 75,000 applicants have enrolled in the various programs of IGNOU, and you can see the breakup over here. So some of our very famous programs, as I have already said, is the sponsored program of CCH. Though it was launched in 2019, already more than 34,000 people have been trained, and this category of people who are trained are basically the GNMs or the Ayurveda doctors. They have been trained to be able to man the wellness centers, health and wellness centers. And then post-basic BSc nursing program, which is 11,114 applicants, students have been enrolled in this program, and we have a very high percentage of success rate in this program. That is, those people, very few dropouts, because this also ensures a very good job opportunity, not only in India, but many of our BSc nursing students have also been placed outside the country. And of course, then we have the PG diploma programs, which are in a way continuing medical education programs. The importance of these programs is immense because they are multi-skilling our doctors. It is a continuing medical education program so that the healthcare needs of the community till the last man can be looked after. So the outreach of medical colleges is not till the villages or till the rural areas, and this is where our doctors who are serving there get an opportunity to upgrade their knowledge, upgrade their skills by getting training in the best medical colleges in the country, and through this they can help in bringing the the morbidity and mortality rates of the country down. And of course, we have got few other programs which are like biomedical waste management. Again, is a very important program. As I told you that it has been recognized by WHO, with which we have had an MOU. It has been recognized by the ministry, who has sponsored their candidates. In fact, the state government of Gujarat has sponsored candidates. State government of Odisha has agreed to sponsor candidates, and very soon the state of Karnataka will also be sponsoring. State of Delhi has certainly always been sponsoring candidates for this program. This is just to quantify what is the special features of this program. So it helps in the competency building of the nation by continuing education, by renewal of registration of the health professionals, and upgrading their knowledge and skills to practice with proficiency. And as an individual also, you get a lot of promotional avenues, you get a better job opportunities, financial incentives are there, and also you can achieve higher educational qualifications, which in the conventional system you may not be possible. And then it does meet the social needs because the trained functionaries are available at the doorstep of the community. The equitable access at the primary care is possible, and there are strengthening of the multidisciplinary teams is possible, and a very sound referral system can be built up, which is very important in our country. And this is one of the very weak
aspect in our country as far as healthcare is concerned, because we do have tertiary centers and we do have some primary care centers, but linking them, we do not have a referral. So if a person is not able to be treated at the periphery, then how he can reach the tertiary center, where he should be referred, how he should be referred, when he should be referred, is something which is taught to all our students who undergo the various programs from School of Health Sciences. Now we are coming to the program package. Our programs across the schools in IGNOU are not just corresponding or even distance education programs, but they have got multiple media, and multiple media is the reason why our programs are a success, because in spite of the distance that we have with our learners, we are able to effectively communicate, effectively deliver, and effectively have positive outcomes from our students as far as the knowledge and skill both is concerned. So as far as the medical programs are concerned, we have a very essential component of a face-to-face hands-on training, because without that, nursing and medicine is not possible to be taught. You do need to have some demonstration, some practice of the skills that are taught. So we have a very essential component of hands-on training. But in addition to this, we do certain online classes in which demonstrations of these skills is done. Theory counseling, academic counseling is done. We have got very effective self-instructional material which are like a replacement of the teacher. We have various videos which are standalone or even recorded classes of our online lectures, which are shown and shared with the students. And we do have a very stringent system of evaluation. So we have a continuous assessment and we have a term end assessment. So this is how we normally run all our programs, though I will be talking about the individual programs one by one, but this is the basic idea behind which the programs have been developed and are offered. And the main reason of the multiple media is, number one, reinforcement. If you are reading it in the book, by seeing a video, you get reinforced about the same concept. Sometimes it may not be very clear what is written in black and white, but when you see a video and you actually see how the the examination of a particular patient takes place, how the management takes place, you can comprehend it better. The second reason why we do it through a multimedia approach is that every student is unique. Every student has a different learning style and a learning capability. So for example, I may be a lone learner. I may like to sit in my room with a book and I don't want to be disturbed, don't want to talk with anybody, and I am very good at it and I learn. But there may be another student who cannot sit with a book. He cannot concentrate. He requires interaction with students. He requires people to explain him. He requires to see a video. So this way we are able to cater to all the learner needs and individual learning styles of a learner, and hence our courses not only complement but supplement each other and are very useful and popular. In fact, as far as our medical programs are concerned, all our course material is used by the conventional system. All our MCH material, geriatric medicine material is used by postgraduates of pediatrics, of gynae, because our material is so good. Okay, so this is an infrastructure that I am showing you over here as far as the delivery of the School of Health Sciences programs is concerned. On one side, you can see the delivery of the programs for the medical doctors, and on the right side, you can see how the nursing programs are delivered. So basically, the infrastructure and the delivery pattern remains the same except for a few minor differences. For example, all the course is planned, developed, and the implementation plans are prepared in the schools of studies, that is in IGNOU headquarters. And then you have certain the cells, you have certain divisions, like you can see here. You have the evaluation division, the admission divisions, which supplement and support the programs which are offered. And we have cells and special centers also, which are also helping us in offering the programs. Like we have the placement cells, we have the innovation centers, and then we have at the regional center, that is at the local center all over the country. In every state, we have at least one regional center, and as I told you before, regional centers are the administrative centers, which are not only a link between the headquarters of IGNOU and our training centers, but they also do a lot of work as far as monitoring is concerned, as far as licensing is concerned, and as far as
monitoring is concerned. So we have got the medical colleges here for the medical programs. The students come over here for a demonstration of particular practicals and for practice under supervision. Now, because medical colleges cannot be there in every city and every nook and corner where the student is staying, there are the medical colleges students have to make their own arrangement to come and stay, and so we keep it for a short duration of time. For example, in MCH program or geriatric medicine program, we have 2 contact spells in the whole year. So they come for about 8 to 10 days for each contact, and then they go back. Now, medicine cannot be learned just by 8 days or 10 days contact. So we also have a system of district hospitals. These are called the skill development centers. Over here, there is a ratio of 1:1 of supervision. Under a supervised medical practitioner or a consultant, you learn the skills which you had been demonstrated in the learner support center or in the medical college. These skills, one by one, you are given a logbook. Each skill you have been told how many times to be able to practice and show to your counselor in the district hospital. And after you have completed that, you also need to practice in your workplace. So this workplace, you go on practicing for proficiency. If you find any problem, anywhere you get stuck, you have to contact your either academic counselor in the skill development center or in the medical college. Similarly, if you see for the nursing, we have got the nursing colleges where the learner support center is generally established. You are again demonstrated certain skills. For certain programs, you may have only colleges of nursing which are the centers, or sometimes you may even have district level centers. For example, in the CCH program, you have district level centers for training. But sometimes you also have a 2-tier approach in which you have a college of nursing, and for some activities, at the local level, you are practicing, and this is called a work center. This, for example, in the program of certificate in home-based care, you only have work centers. You do not have college of nursing or a learner support center. You have work centers, but you are supported by the headquarters where through a online platform, the rest of the counseling takes place. And of course, the student is supported with a single platform or a kind of a web support platform, or you can say a website which is specifically developed for each program. And here, this is a single platform where you get all information, you can interact with each other, you get all the course material, videos, the administrative circulars, the previous question papers, everything is put here. So this is how the programs in general and broadly run for the health sciences or the medical programs and the nursing programs. Again, across all programs in the School of Health Sciences, we have got a very stringent evaluation system. We have got certain courses which are theoretical in nature, they are called theory courses, and we have got certain practical courses for which you need to perform and do certain skills. So the theory component we have got for evaluation is done in 2 ways. One is in assignments. These are basically tutor marked assignments, and they are a part of the continuous evaluation of a student, because these are given along with the course material. A deadline is provided. You are supposed to answer the assignments in pen and paper and submit it to your learner support center coordinators, who evaluate them, and you have to separately clear them before you are allowed to sit for the term end examination. A term end examination takes place at the end of the session. If it is a 1-year program, you will have it after 1 year. If it is a 6 months program, you will have it after 6 months. Of course, for the practical courses also, you have got internal assessment, and this internal assessment is done by the academic counselors. And then you have got the term end evaluation, and this is the term end examination, again takes place depending upon how long is the program. So you can have a 6 months program, you will have it after 6 months, and if it is a 1-year program, it will be after 1 year. For a bachelor's degree, for every year you have got exam and you have to clear those exams. So as is there for all programs in IGNOU, there is a flexibility of a minimum and a maximum duration that you can complete the program. For every certificate program, the minimum duration is 6 months and the maximum duration is 2 years. For a diploma program or a postgraduate diploma, a minimum duration is 1 year and a maximum duration is 3 years. Whereas in a bachelor's degree, it is from 3 to 5 years. So this is how the programs run.
Now we also have a very important feedback and a monitoring system, because without that it is very difficult for us to maintain quality. And in fact, I always in all my forums say that a distance education system and a distance education student is always considered as a adopted child. He is not the real child, and we have to prove our worth. A conventional system person is not asked to prove his worth because he is the blue-eyed boy of the parent, but we have to prove our worth, because of which in a way it is a good thing, because we have developed very stringent monitoring and feedback systems, and so our programs are very foolproof. Now, before we go on to the program, sir, if there are any questions, I think we can ask, because this is the general concept in which the programs have been developed and the programs are offered, and then I will come one by one to the details of the programs. Yes. So if there are any question, certainly our viewers can ask those questions and we'll take up one by one. लेकिन जब तक ये सब होता है, जब तक हमारे पास प्रश्न आते हैं, मैं सभी छात्रों को, ये जो भी लोग आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा। और पहली बात तो ये है कि हमारी जो एडमिशन्स की जो प्रक्रिया है वो आजकल चल रही है। ये जितने भी प्रोग्राम्स अभी हमारे डायरेक्टर स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेस ने बताए, ये सभी शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए एडमिशन्स की प्रक्रिया चल रही है। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि हमारे शैक्षिक कार्यक्रम जो भी जितने भी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के हैं, वो शैक्षिक कार्यक्रमों में से कुछ शैक्षिक कार्यक्रम ऐसे भी हैं जो कि या तो जनवरी के साइकिल में होते हैं या फिर वो जुलाई के साइकिल में ही होते हैं। इनके बारे में डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये कि हमारे जो एडमिशन्स की जो साइकिल्स हैं, साल में 2 एडमिशन साइकिल होती हैं। पहली तो है जो जनवरी से स्टार्ट होती है और दूसरी साइकिल वो है जो जुलाई से स्टार्ट होती है। साइकिल से मेरा ये अभिप्राय है कि आपका शैक्षिक सत्र, जब अभी आजकल जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के एडमिशन्स हो रहे हैं, वो जुलाई से जो हमारा शैक्षिक सत्र शुरू हो रहा है उसके लिए हैं। और इसके लिए जो लास्ट डेट निर्धारित की गई है वो है 31 जुलाई। हमारी जो वेबसाइट है वो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वेबसाइट है, और इस वेबसाइट का जो एड्रेस है वो मैं आपको बता दूं, www.ignou.ac.in। इस वेबसाइट के होम पेज पर ही आपको वो लिंक मिल जाएगा जिसके ज़रिए आप हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों में एडमिशन ले सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाएं और होम पेज पे आपको वो लिंक मिल जाएगा, और उसके बाद उस लिंक पर जब आप प्रेस करते हैं तो आप एक ऐसे विंडो पर पहुंच जाते हैं, एक ऐसे वेब पेज पर पहुंच जाते हैं जहां पर सारी की सारी जो गाइडलाइंस हैं एडमिशन से रिलेटेड, किस तरीके से आपको एडमिशन लेना है, ये सारी की सारी प्रक्रिया वहाँ पर लिखी हुई है। और वहाँ पर आपको एक लॉगिन पासवर्ड बनाना होगा और उसके ज़रिए आप एडमिशन ले सकते हैं। ये प्रक्रिया बहुत आसान है और वो वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई है। ये तो पहली बात हो गई। अब दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप में से कई छात्र वर्ग ऐसे होंगे जो कि ये सोच रहे होंगे कि किस तरीके से हम इतने सारे जो 20 एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं इग्नू के, उसमें से कैसे इस बात पर हम निर्णय लें कि कौन सा शैक्षिक कार्यक्रम हमारे लिए कितना अच्छा हो सकता है। उसके बारे में और विस्तार से जानना चाहेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको पहली चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगा वो ये है कि हमारा जो प्रॉस्पेक्टस है वो प्रॉस्पेक्टस फ्री है और हमारी वेबसाइट पर फ्री डाउनलोडिंग के लिए रखा गया है। तो हमारा जुलाई 2022 का जो हमारा शैक्षिक सत्र है उसका प्रोस्पेक्टस आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। उसमें सभी शैक्षिक, केवल हेल्थ साइंसेज नहीं, सभी शैक्षिक कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताया गया है। हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको भी लिखा गया है, और साथ में हर एक शैक्षिक कार्यक्रम के बारे में ये भी लिखा हुआ है कि ये शैक्षिक कार्यक्रम का ब्रीफ में इसका सिलेबस क्या होगा, किस तरीके की चीज़ें इस शैक्षिक कार्यक्रम के जरिए पढ़ाई जाती हैं, इसकी फ़ीस क्या है, इसका माध्यम क्या है, यानी कि हर एक जानकारी। उसके बाद यदि आप इंडिविजुअल किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं, उसका डिटेल्ड सिलेबस जानना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें भी हमारी प्रोग्राम गाइड्स हैं। हर एक शैक्षिक कार्यक्रम के लिए हमारी प्रोग्राम गाइड्स बनी हुई हैं। ये प्रोग्राम गाइड्स में काफ़ी विस्तार से उसका सिलेबस दिया होता है और उसके प्रोग्राम स्पेसिफिक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, और ये प्रोग्राम गाइड्स भी आपको हमारे वेबसाइट पर फ्री डाउनलोडिंग के लिए मिल जाएंगी। तो कहने का ये आशय है कि यदि आप हमारे किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पहले हमारा प्रोस्पेक्टस पढ़िए। उसमें से आप एक बार हमारे जो भी शैक्षिक कार्यक्रम के बारे में आप अपना मन बना लें, और उसके बारे में विस्तार से उसका सिलेबस जानने के लिए उसकी प्रोग्राम गाइड को भी देखें। इतना ही नहीं, हमारा इन सभी शैक्षिक कार्यक्रमों का जो भी कोर्स मटेरियल है वो भी हमारे ई ज्ञान कोश नाम के हमारे एक ऑनलाइन रिपोजिटरी है।
एक ऑनलाइन नॉलेज रिपोजिटरी जो कि इग्नू ने डेवलप की है, और इसका लिंक हमारी वेबसाइट पर दिया हुआ है होम पेज पर। इसको कहते हैं ई ज्ञान कोश। आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, उसके होम पेज पे ये लिंक आपको मिल जाएगा। आप उसमें जाके देखिए कि आपको कई शैक्षिक कार्यक्रम, सभी हमारे जितने भी शैक्षिक कार्यक्रम हैं उन सभी शैक्षिक कार्यक्रमों का डिटेल्ड सिलेबस, डिटेल्ड कोर्स मटेरियल वहाँ पर दिया गया है। उसको आप चाहें तो डाउनलोड भी कर लें, उसको विस्तार से पढ़ लें, क्योंकि यही कोर्स मटेरियल है जिसको कि आप जब अगर एडमिशन ले लें तो आपको वहाँ पर जाके इस कोर्स मटेरियल को पढ़ना होगा। तो इसीलिए वो फ्री है, आप उसको डाउनलोड करें, पढ़ें। इतना ही नहीं, उसके अलावा वहाँ पर इन सभी शैक्षिक कार्यक्रमों के जो ऑडियो और वीडियो प्रोग्राम्स हैं, जो हमने अलग अलग अपने जो कोर्सेज़ हैं उस पर, उसके जो कंटेंट है, उसका जो कोर्स मटेरियल है, उस कोर्स मटेरियल पर आधारित हमने ऑडियो और वीडियो प्रोग्राम्स बनाए हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा रुकूंगा क्योंकि एक कॉलर हैं ग्वालियर से जो कि बात करना चाहते हैं, तो उनका प्रश्न हम ले लेते हैं। आप अपना प्रश्न बताइए, ग्वालियर से जो हमारे कॉलर हैं। जी नमस्ते सर। सर मेरा नाम ओमवती शर्मा है, मैं ग्वालियर से बोल रही हूँ। मैं इग्नू की फर्स्ट ईयर MSW की स्टूडेंट हूँ जी। 2000 जुलाई में मेरा एडमिशन हुआ था सर। तो मैं अपना रीजन सेंटर चेंज करवाना चाहती हूँ यहाँ पर ग्वालियर, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, आपका जो स्टडी सेंटर चेंज कराना चाहते हैं आप अपना? जी, स्टडी सेंटर और मतलब रीजनल सेंटर भोपाल हो जाएगा, यहाँ दिल्ली है अभी मेरा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, आपको अपना अगर रीजनल सेंटर चेंज कराना है तो आप उसको आसानी से एक ईमेल कर दीजिए, अपने रीजनल सेंटर को ईमेल कीजिए और वो आपका रीजनल सेंटर चेंज कर देंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने की है कि जहाँ भी आपको अपना रीजनल सेंटर जिस अध्ययन केंद्र में या जिस रीजन में चाहिए, और वहाँ के जिस जो भी अध्ययन केंद्र में आप चाहते हैं, तो वहाँ पर वो प्रोग्राम एक्टिवेटेड होना चाहिए। और जी सर, है वो हाँ, वहाँ तो जीवाजी आप यूनिवर्सिटी एक में है। ईमेल अपने रीजनल सेंटर को कीजिए, और इस प्रक्रिया में उनको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 1 हफ्ते के अंदर आपका रीजनल सेंटर चेंज हो जाएगा। दिल्ली जो मेरा सेंटर है, मैं वहाँ पे मेल करूँ सर? हाँ, उनको ईमेल कर लीजिए। जी सर, जी सर, जी। ओके सर। तो इस प्रश्न के बाद मैं आपको ये बता, और कोई भी कॉलर अगर अपना कोई प्रश्न पूछना चाहें तो निसंकोच बीच में प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि हमारा जो ई ज्ञान कोश नाम का जो हमारे ऑनलाइन रिपोजिटरी है, इस रिपोजिटरी में हमारे सभी कोर्सेज़ का हमारा स्टडी मटेरियल दिया हुआ है, और इस स्टडी मटेरियल को भी आप देख सकते हैं एडमिशन लेने से पहले, अपना मन बनाने के लिए कि कौन सा कोर्स, इसका कंटेंट आपके लिए कितना यूज़फुल है। इतना ही नहीं, मैंने जैसे बताया कि ऑडियो और वीडियो प्रोग्राम्स, जो कि हमारे सब्जेक्ट हर एक कोर्सेज़ के बारे में हमने ऑडियो और वीडियो प्रोग्राम्स डेवलप किए हैं, और ये ऑडियो और वीडियो प्रोग्राम्स ही हमारे ई ज्ञान कोश पर फ्री डाउनलोडिंग के लिए उपलब्ध हैं। इनको भी आप देखें। इसका एक कैटलॉग है जिसको हम कैटलॉग ऑफ ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स कहते हैं, और ये कैटलॉग भी हमारे वेबसाइट में उपलब्ध है। तो आप इस कैटलॉग को देखें, और उसमें आपको जिस कोर्स के लिए भी आप इंटरेस्टेड हैं उसके ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स की भी लिस्ट मिल जाएगी, और उनको भी आप देखें क्योंकि ये सब कुछ फ्री है। और उसके बाद आप अपना निर्णय लेने में इन सभी रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। एक प्रश्न जो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है वो ये है कि हम इग्नू के कार्यक्रमों में एडमिशन लेने के लिए कहाँ जाके सूचना लें, हमारे चाहे हेल्थ साइंसेज के ही प्रोग्राम हो चाहे कोई भी अन्य प्रोग्राम हो। तो देखिए, इस बारे में आपको बताना चाहूँगा, सूचनाएं देने के लिए हमारा एक राष्ट्रव्यापी एक नेटवर्क है जो कि रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर्स का एक सारे राष्ट्र में फैला हुआ हमारा एक नेटवर्क है। बल्कि अब तो इग्नू के सेंटर्स तो काफ़ी समय से विदेशों में भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि हिंदुस्तान में हैं, आपको कहीं भी हैं देश के किसी भाग में, आपको कहीं ना कहीं पर आपको आपके घर के पास एक इग्नू का अध्ययन केंद्र या रीजनल सेंटर अवश्य मिल जाएगा। आप रीजनल सेंटर हमारे फुल टाइम सेंटर्स होते हैं, और जो स्टडी सेंटर्स होते हैं वो हमारे पार्ट टाइम स्टाफ के द्वारा मैनेज सेंटर होते हैं। इसलिए हमारा रीजनल सेंटर तो मंडे से लेके फ्राइडे तक हर रोज़ खुलता है। वहाँ पर हमारे फुल टाइम एम्प्लॉयज़ होते हैं, हमारे एकेडमिक्स होते हैं, जिनके पास आप कभी भी जा सकते हैं वर्किंग डेज़ पर। कोई आपको प्रायर अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उनके पास जाएं और वो आपको खुशी से आपको प्री एडमिशन काउंसलिंग देंगे, आपको हमारे सभी शैक्षिक कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताएंगे। दूसरी बात है, जो हमारे अध्ययन केंद्र, ये भी हमारे सूचना प्रदान करने के केंद्र हैं। इन केंद्रों में आप एक नियत समय पर जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पार्ट टाइम स्टाफ द्वारा मैनेज्ड सेंटर्स हैं,
और हर एक अध्ययन केंद्र का कार्य करने का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, और वो टाइम या उसका फंक्शनिंग टाइम हमारी वेबसाइट पर लिखा हुआ होता है। तो आप जिस रीजनल सेंटर के अंतर्गत भी आते हैं, उस रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर जाएं, और उस रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर हमारे अध्ययन केंद्रों की जो सूची है, उस सूची में अध्ययन केंद्र के कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनके ईमेल आईडीज़, उनके फंक्शनिंग टाइमिंग्स, ये सभी वहाँ पर उनका उल्लेख होता है, और आप वहाँ पर देखने के बाद आप निसंकोच आप कभी भी जा सकते हैं, जो कि उनके फंक्शनिंग टाइमिंग के अंतर्गत आता है। तो ये भी एक तरीका है जहाँ पर जाके आप हमारे से हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों के बारे में प्री एडमिशन काउंसलिंग ले सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा जो एक मेजर जो एक आप सूचना लेने का एक तरीका है, वो हमारी वेबसाइट है, जिसमें हर एक जानकारी है, जैसा मैंने आपको बताया। इसके अलावा हमारा विश्वविद्यालय जो टीवी चैनल जो चलाता है, जिसके माध्यम से अभी आप हमें देख रहे हैं, ज्ञान दर्शन टीवी चैनल, इसमें हर हफ्ते 3 से 4 बजे के बीच में हमारा क्षेत्रीय सेवा प्रभाग अपने अधिकारियों के साथ आप हाजिर होता है, और इस दरमियान जो भी चाहे तो हमारे इनसे प्रश्न कर सकता है, हमसे किसी बारे में सूचना ले सकता है। और इसके अलावा इन कार्यक्रमों के अलावा भी अन्य कई कार्यक्रम होते हैं, जिनको कि आप लगातार इन ज्ञान दर्शन के शैक्षिक इन लाइव प्रोग्राम्स के दरमियान देख सकते हैं। इस दरमियान भी आप चाहें तो प्रश्न पूछ सकते हैं, और हम लोग खुशी से आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि उन छात्रों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों में भी एडमिशन लेना चाहते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हैं, तो निसंकोच हमारे रीजनल सेंटर्स या हमारे स्टडी सेंटर्स को कांटेक्ट करें, हमारे इन कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करें, जो कि हर एक मंगलवार को 3 से 4 के बीच में होता है। या आप हमारे वेबसाइट को कांटेक्ट में देखें। हमारी वेबसाइट, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें सभी हर संभव कोशिश हमने यही की है कि हम सारी सूचना वहाँ पर डाल दें। इतना ही नहीं, हमने पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर्स भी यहाँ पर अपलोड करके रखें। जिस शैक्षिक कार्यक्रम में भी आप एडमिशन लेना चाहें, उसमें पुराने सालों के जो क्वेश्चन पेपर्स को भी देख सकते हैं। उससे भी आपको बहुत सारा इस चीज़ के बारे में आइडिया हो जाएगा कि ये शैक्षिक कार्यक्रम कैसा है और इसमें किस तरीके क्या आपकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो ये कुछ बातें थी जो यदि आपके कुछ प्रश्न हो तो अवश्य हम उसका जवाब देंगे। लेकिन इन द मीन टाइम मैं डॉक्टर रुचिका कुबा जो हमारे डायरेक्टर हैं स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज की, उनसे फिर से एक बार मैं ये प्रश्न करना चाहूँगा कि हमारे जो एकेडमिक प्रोग्राम 6 महीने के हैं, ये शैक्षिक कार्यक्रम तो काफ़ी रोचक विषयों पर हैं, और केवल डॉक्टर्स या नर्सेस के लिए तो जनरली हमारे स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोग्राम इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन होम बेस्ड हेल्थ केयर नाम का एक जो हमारा शैक्षिक कार्यक्रम है, ये एक आम हमारा जो स्टूडेंट है जिसका कि नर्सिंग या मेडिकल साइंसेज के फील्ड में बहुत ज़्यादा विस्तार से उसका बैकग्राउंड नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज का ये कार्यक्रम कर सकता है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। ठीक है सर। तो जो होम बेस्ड केयर है वो एक सर्टिफिकेट लेवल प्रोग्राम है, वो 6 महीने का प्रोग्राम है, और ये जैसे आपने कहा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। ये सिर्फ उसके लिए नहीं है जो कि किसी की केयर करना चाहता है, मैं तो कहूँगी हर एक इंसान को ये प्रोग्राम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके घर में कभी भी किसी को भी केयर करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि छोटा बच्चा है, उसको कैसे केयर की ज़रूरत है, एक प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको कैसे केयर की ज़रूरत है, आपके ओल्ड पेरेंट्स हैं, ओल्ड इन लॉज हैं, उनको कैसे केयर करने की ज़रूरत है, कोई सर्जरी में किसी को पोस्ट ऑपरेटिव, उसको कैसे केयर करेंगे। तो ये होम बेस्ड केयर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। इसके लिए हमारा क्वालिफिकेशन बहुत कम है, आपको ग्रेजुएट भी होने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ही सिंपल वे से इसको बताया गया है। और हमारा बहुत सारा हम लोग ऑनलाइन सपोर्ट इससे देते हैं, हेडक्वार्टर से भी आपकी एकेडमिक काउंसलिंग होती है, और कुछ सेंटर्स हैं ऑल ओवर द कंट्री जिसमें आप जाके थोड़े से स्किल्स आप सीख सकते हैं, और इसके बारे में आप और जानकारी ले सकते हैं। मैं बीच में आपको रोकना चाहूँगा। आरसी जबलपुर से एक प्रश्न है। जबलपुर से जो कॉलर हैं वो अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी बताइए। सर, नमस्कार सर, मैं हरीश केवट इग्नू जबलपुर से। सर, मेरा मैडम के लिए प्रश्न था। मैडम, जो कम्युनिटी हेल्थ सर्टिफिकेट प्रोग्राम है जी, जो कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम है सर्टिफिकेट लेवल का, उसके लिए हमारे पास काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं कि ये
ये NHM के अलावा क्या हम अदर सेंटर में एक्टिवेट करके करवा सकते हैं क्या, और इसको हिंदी में भी उपलब्ध कराने का भविष्य में कुछ योजना है क्या? ठीक है। हाँ, तो ऐसा है कि इसका क्योंकि ये टोटली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, MOHFW ने ही सेंटर्स और स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर किया है, तो आप अपनी रिक्वेस्ट और रिक्वायरमेंट भेज दीजिए और उसको हम उनके साथ डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद हम उसको करेंगे। एट प्रेजेंट तो अभी हिंदी में नहीं है, लेकिन वी आर थिंकिंग अबाउट दैट। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी के साथ में जो हमारा जो इसमें चर्चा चल रही थी उसी के बारे में मैं आपसे फिर से पूछना चाहूँगा कि होम बेस्ड हेल्थ केयर के बारे में हमारे श्रोताओं को, हमारे जो भी लोग आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको थोड़ा सा विस्तार से बताएं। लेकिन इन द मीन टाइम एक और कॉल हमारी नागपुर से है। आप अपना प्रश्न पूछें। हेलो जी बताइए। हाँ नमस्कार, डायरेक्टर RSG डॉक्टर यूसी पांडे जी और मैडम रुचिका कुबा। ये CHBHC प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन चल रहा है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम नागपुर रीजन में बहुत पॉपुलर हुआ था। जैसे गढ़चिरौली में हमने ये CHBHC कंप्लीट किया, लोगों को 100% प्लेसमेंट भी दिलाया। और जैसे हमारे गाँव की बच्ची हैं, वो 10वीं पास के बाद और कुछ आगे पढ़ने की चांस नहीं मिलता है, तो ये कोर्स करके उनको हॉस्पिटल्स में और ओल्ड एज होम्स में नौकरी भी मिल रही है। ये तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ये मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इनफैक्ट वी आर वेरी ऑब्लाइज्ड एंड बहुत ही हम हमेशा नागपुर को कोट करते हैं कि नागपुर सेंटर में हमारा ये बहुत अच्छा प्रोग्राम चला और बहुत सारे लोगों को भी इसका फ़ायदा हुआ, कम्युनिटी को भी फ़ायदा हुआ, और इसी तरह से और सेंटर्स में भी ये प्रोग्राम चलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और हम ये सोच रहे हैं कि अब हम इसको स्किल मिनिस्ट्री के साथ भी करके इसको हम ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं, क्योंकि ये कम्युनिटी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम के बारे में हमारी चर्चा चल रही थी, उसके बारे में और आप अगर कुछ बताना चाहें होम बेस्ड हेल्थ केयर के बारे में। सो मैं आई नाउ टॉक अबाउट द वेरियस कैटेगरीज, क्योंकि आपने देखा कि हमारे 20 प्रोग्राम रन कर रहे हैं स्कूल से, तो थोड़ा थोड़ा मैं हर एक प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूँगी ताकि जो भी इच्छुक हैं किसी भी प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। जैसे डॉक्टर पांडे ने कहा कि आपको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिले, तो आज हम इसीलिए आए हैं कि आपको हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स, सारे प्रोग्राम्स के बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन बता दें। और मेरे साथ फ़ोन पे मेरे सारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स भी जुड़े हुए हैं, तो किसी भी प्रोग्राम के बारे में अगर आपको विस्तार जानकारी चाहिए तो वो भी हम आपको प्रदान कर सकते हैं। बीच में रोकना चाहूँगा, आप उन शैक्षिक कार्यक्रमों के बारे में बताएं जो कि केवल डॉक्टर्स या नर्सेज के लिए नहीं है, लेकिन उसको एक आम कॉलेज का स्टूडेंट या सर मैं जो सबके कर बारे सकता में है ही उनके बारे में तो हम लोग जैसे कि सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड करके भी सबके बारे में ही जी, बताऊंगी सर। तो इनके बारे में थोड़ा 1 by 1 अगर आप बताएं सबके बारे में 1 by 1 बताऊंगी। तो अभी आई एम जस्ट स्टार्टिंग, क्योंकि मैं शुरू से पीजी डिप्लोमा से स्टार्ट कर रही थी। तो ये पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं बेसिकली। ये जो चारों प्रोग्राम्स हैं, ये 3 पीजी डिप्लोमास हैं और एक पीजी सर्टिफिकेट है। ये सिर्फ MBBS डॉक्टर्स के लिए हैं, और आप देख सकते हैं कि बेसिकली ये अलग अलग कैटेगरीज के कॉम्पिटेंसीज को इंक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल PGDMCH इज़ फॉर अपडेटिंग नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसी इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। सिमिलरली जीरियाट्रिक मेडिसिन का मतलब होता है ओल्ड एज लोगों की मेडिसिन। सो बेसिकली आपको ये सिखाता है दैट हाउ टू कम्प्रीहेंसिवली डील विद द हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली इन द कम्युनिटी। सो जीरियाट्रिक मेडिसिन एक स्पेशलाइजेशन है एंड सब लोग उसके अंदर MD नहीं ले सकते हैं। और जनरल डॉक्टर्स को जीरियाट्रिक मेडिसिन के बारे में इतना नहीं पता होता, क्योंकि जिस तरह से एक एल्डरली प्रेजेंट करता है, जिस तरह से एक एल्डरली को मैनेज करना पड़ता है, वो आम एडल्ट से बहुत फ़र्क होता है। इसलिए इस प्रोग्राम में बहुत पॉपुलर है हमारा प्रोग्राम, एंड लॉट ऑफ डॉक्टर्स ज्वाइन बिकॉज देन दे विल बी एबल टू ट्रीट द एल्डरली हु आर कमिंग टू देयर क्लिनिक्स और देयर हॉस्पिटल्स। HIV मेडिसिन एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। अगेन इसमें नॉन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये ART सेंटर्स ऑफ HIV को स्ट्रेंथन करने के लिए बनाया गया था, ताकि आप कोई भी एमरजेंसीज को रिकग्नाइज कर सकें और हैंडल कर सकें जो HIV रिलेटेड हो। PGCMDM प्रोग्राम जो हमारा है दैट इज़ फॉर मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ CBRNE डिज़ास्टर्स, जैसे मैंने बताया ये इन मास DRDO के लिए है, और ये उन सिचुएशंस के लिए है जो अभी
फ़िलहाल एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं लेकिन आ सकती हैं। और ये प्रोग्राम बड़े इंटरेस्टिंग टाइम पे लॉन्च हुआ, जो हमारा 2020 में जनवरी में लॉन्च होने वाला था, जबकि कोविड स्टार्ट हो गया। और कोविड भी एक तरह का बायोलॉजिकल इमरजेंसी है, बायोलॉजिकल डिज़ास्टर है। तो बहुत ही एप्ट टाइम पे ये प्रोग्राम आया और हमें थोड़ा सा उसको, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से डिले करना पड़ा, तो जनवरी के बजाय हमने जुलाई से लॉन्च किया। लेकिन बहुत ही फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस सब स्टूडेंट्स को मिला, उनको बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम। एंड दे रियलाइज्ड कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उनको एक बायोलॉजिकल डिज़ास्टर का हुआ, और उन्होंने रियलाइज़ किया कि कैसे जब मास कम्युनिटी में इफ़ेक्ट करती है एक डिजीज़ तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है। ये उसी को देखता है। अगर कल को न्यूक्लियर डिज़ास्टर होगा या कोई एक केमिकल डिज़ास्टर होगा, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, तो हम कैसे इतने सारे कैजुअलिटी को एक साथ कैसे हैंडल करें, किसको ट्रीट करें, उनको कहाँ रेफ़र करें, और उनको जनरल पब्लिक को क्या अवेयरनेस दें। तो ये थोड़ा सा इनके बारे में है। अगर आप लोग जानना चाहें तो जैसे कि पीजी डिप्लोमा मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, इसमें नंबर ऑफ़ थ्योरी कोर्सेज एंड प्रैक्टिकल कोर्सेज हर एक प्रोग्राम का दिया हुआ है। ये सारा, जैसे पांडे जी ने बोला, ये सारे डिटेल्स हमारे स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज के वेबसाइट, जो इग्नो की वेबसाइट है, उसके अंदर स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज के स्कूल के प्रोग्राम्स दिए गए हैं। आप वहाँ पर जा सकते हैं और जब आप उसको क्लिक करेंगे तो एक एक प्रोग्राम के सारे डिटेल्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर ज़्यादातर मेडिकल प्रोग्राम्स की 3 टायर अप्रोच हम फॉलो करते हैं, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाऊंगी। और इवैल्यूएशन थ्योरी कोर्सेज का अक्रॉस द स्कूल सारे प्रोग्राम्स का सेम है। असाइनमेंट्स हैं जिसमें 30% वेटेज होती है, और टर्मेंट है जिसमें 70% वेटेज होती है। लेकिन प्रैक्टिकल कोर्सेज का इवैल्यूएशन हर एक प्रोग्राम में डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर मैंने टेबल पे सिर्फ प्रैक्टिकल कोर्सेज का इवैल्यूएशन लिखा है, ताकि आपको समझ में आए कि कितना वेटेज हम लोग इंटरनल असेसमेंट में देते हैं और कितना टर्म एंड एग्जामिनेशन में देते हैं। फॉर एग्जांपल PGDGM में हम 50% वेटेज देते हैं इंटरनल असेसमेंट का है, और PGCMDM में, पर बाकी HIV में और PGDMCH में हम सिर्फ 30% वेटेज इंटरनल असेसमेंट को देते हैं। ये आपका 3 टायर स्ट्रैटेजी है प्रैक्टिकल कोर्सेज का, जो मैंने आपको पहले भी बताया। आपको प्रैक्टिकल मैनुअल्स मिलते हैं इस प्रोग्राम के लिए स्पेसिफिकली, जो आपके घर में पढ़ सकते हैं। देन आपको डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है मेडिकल कॉलेजेस में। सो ओवर द कंट्री वी हैव दिस प्रोग्राम इन 10 to 12, सम ऑफ द प्रोग्राम्स 15 मेडिकल कॉलेजेस। और हम ये कोशिश अब कर रहे हैं कि हम हर एक स्टेट में एटलीस्ट एक मेडिकल कॉलेज में ये प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम्स रन करें, ताकि आपको आराम से अपने सेम स्टेट में फैसिलिटी मिल सके। एंड उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए अपने घर के पास कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल हो, 100 बेडेड हो, आराम से उसमें आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके बाद जहाँ पे भी आप काम करते हैं वहाँ पर आप ये उन्हीं तरह के पेशेंट्स देखकर आपको एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, और ये रिकॉर्ड आपको अपने प्रैक्टिकल टर्म एंड एग्जामिनेशन में लाना होता है। नाउ कमिंग टू PhD नर्सिंग। PhD नर्सिंग तो एक मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है। दिस इज़ अ फुल टाइम प्रोग्राम। सिलेबस इट इज़ एंट्री इज़ थ्रू एंट्रेंस एग्ज़ाम, और ये थोड़ा सा उनकी हमने आपको बताया है कि क्या कोर्सेज़ हैं और कितने कितने मार्क्स हैं। BSc नर्सिंग, जैसे कि मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, और हमारा बहुत बड़ा एनरोलमेंट BSc नर्सिंग से आता है, क्योंकि ये एक काउंसिल रिकग्नाइज प्रोग्राम है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने इसको रिकग्नाइज़ किया हुआ है, और उन्हीं के गाइडलाइंस के हिसाब से प्रोग्राम रन किया जाता है, उन्हीं के रिकग्नाइज सेंटर्स में रन किया जाता है। और बहुत सारे स्किल्स इसमें सिखाते हैं जो कि नॉर्मली नर्सिंग में सिखाए जाते हैं। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि ये जनरल नर्सिंग प्रोग्राम नहीं है, ये पोस्ट बेसिक नर्सिंग प्रोग्राम है। तो जिन लोगों ने GNM या ANM किया होता है, सिर्फ वही लोग ये प्रोग्राम कर सकते हैं। 10+2 वाले लोग इस प्रोग्राम को इमीडिएटली डायरेक्टली ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा आपको क्लिनिकल स्किल्स चाहिए होता है, जिसमें फुल टाइम हॉस्पिटल में रहना ज़रूरी होता है, जो इस प्रोग्राम में आप नहीं कर सकेंगे। तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स, क्लिनिकल स्किल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च और टीचिंग स्किल्स इसमें सिखाए जाते हैं। ये थोड़ा सा उसका है कि थ्योरी में हमारे 3 साल में हम लोग क्या क्या कोर्सेज कराते हैं, उनके कितने क्रेडिट्स हैं। क्रेडिट्स का मतलब होता है इग्नो में कि एक क्रेडिट अगर है किसी कोर्स में, उसका मतलब 30 घंटे आपको लगेंगे उसको पढ़ने में, समझने में, उसका असाइनमेंट करने में, उसका साथ में दिया गया वीडियो करने में। ये सारा आप समझ सकते हैं कि अगर नर्सिंग फाउंडेशन 4 क्रेडिट्स का है तो 120 घंटे इस कोर्स को पढ़ने में आपको लगेंगे। ये प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं, जिसमें अगेन काउंसलिंग सेशंस होते हैं, कॉन्टेक्ट सेशंस होते हैं, सेल्फ स्टडी होता है। फिर हमारे कुछ नर्सिंग प्रोग्राम्स हैं जो सिर्फ नर्सिस के लिए ओपन है, वो नर्सिस इसको ज्वाइन कर सकती हैं, जैसे डिप्लोमा इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिटिकल केयर नर्सिंग,
मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और न्यूबॉर्न एंड इन्फेंट नर्सिंग। ये सारे प्रोग्राम्स भी हमारे काउंसिल से अप्रूवल के बाद ही हमने लॉन्च किया है, नहीं तो हमें अलाउड नहीं होगा नर्सिस के लिए कोई भी कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन प्रोग्राम्स है। और आप अगर नर्स हैं आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपको कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन के क्रेडिट्स भी इसमें मिलेंगे जिसको आप अपना री रजिस्ट्रेशन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगेन ये मैंने बीएससी नर्सिंग में यहाँ कोर्सेज नहीं लिखा है क्योंकि डिटेल्स आपको बता दिया है। बाकी जो 2 प्रोग्राम सीसीएच और डीएनए प्रोग्राम है उसके बारे में डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे इनका इम्प्लीमेंटेशन होता है और कैसे प्रैक्टिकल का इवैल्यूएशन होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि थ्योरी इवैल्यूएशन सेम रहता है। जी, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा। पटना से यहाँ पर कॉल है। पटना से एक कॉल है। जो कॉलर हैं आप अपना प्रश्न पूछिए प्लीज़। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, थोड़ा ज़ोर से बोलिए। जी, मेरा नाम आकर्षण अग्रवाल है। मैं CHBHC का स्टूडेंट रहा हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये कोर्स काफ़ी ज़्यादा सही था। मैंने RC जयपुर के अंदर में इसको किया था क्योंकि यहाँ बिहार में ये कोर्स अवेलेबल था नहीं उस टाइम, और इस दौरान काफ़ी सहायता मिली, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे यहाँ एक कोर्स है CCH जो SOHS का है, वो जो कि रन होता है मेरे डिस्ट्रिक्ट में, जो कि SOHS का ही प्रोग्राम है। और मैं चाहूँगा कि अगर ये कोर्स अगर यहाँ पर भी किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और इस साल 35th कन्वोकेशन में मुझे ये डिग्री अवार्डेड भी हो गई है, और साथ ही मैं अभी CAFC प्रोग्राम में भी इनरोल हूँ SOHS के। तो काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिली, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छा लगा कि आपने अपना अनुभव शेयर किया और आपने और भी प्रोग्राम्स में आप इंटरेस्टेड हैं। इनफैक्ट हमारे इग्नो में अगर एक स्टूडेंट कोई एक प्रोग्राम में एनरोल करता है तो उसको इतना अच्छा लगता है कि वो 2-3 प्रोग्राम्स में एनरोल करता है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे कई बार प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं और कई बार प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर भी स्टूडेंट बन जाते हैं। तो दिस इज़ जस्ट लाइक अ फैमिली यूनिवर्सिटी, यहाँ सब अदल बदल होता रहता है। ये नर्सिंग प्रोग्राम्स के बारे में डिटेल्स हैं जो मैंने आपको बताया, और डॉक्टर पांडे ने भी बताया कि वेबसाइट पे भी इसके डिटेल्स अवेलेबल हैं। लेकिन ये यहाँ पर क्योंकि एक साथ आप देख सकते हैं कि कितने कोर्सेज हैं, आपको कहाँ कहाँ ऑनलाइन काउंसलिंग करनी है। जैसे CNIN और CMCHM में सिर्फ आपको कोई हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में आने की कहीं भी सेंटर की ज़रूरत नहीं है। सारा हम लोग वेब सपोर्ट के थ्रू करते हैं और ऑनलाइन एकेडमिक काउंसलिंग के थ्रू करते हैं। लेकिन DCCN क्योंकि एक डिप्लोमा प्रोग्राम है, यहाँ पर एक फ़ेस टू फेस काउंसलिंग भी ज़रूरी है और आपको सेंटर में आकर लर्न करना पड़ता है कि कैसे स्किल्स करें, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप फील्ड में जाकर उसको कर भी नहीं पाएंगे। उसी तरह से आप इवैल्यूएशन भी देख सकते हैं। ये हमारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का थोड़ा सा एक स्ट्रैटेजी है जो आप देख सकते हैं कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स और नर्सिंग कॉलेजेस में इन सबको किया जाता है। लेकिन साथ ही साथ आपको कम्युनिटी में प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जब काम करेंगे तो आप कम्युनिटी में करेंगे, तो आपको आना चाहिए कि आप कम्युनिटी में कैसे काम कर सकें, क्योंकि वहाँ पे एक रिसोर्स कंस्ट्रेंट होता है। आपको सब कुछ ईजिली अवेलेबल नहीं होता कि आपने हाथ फैलाया और आपको हर चीज़ मिल गई। आपको ढूंढनी पड़ती है, जो चीज़ अवेलेबल नहीं होती उसका कोई और तोड़ आपको निकालना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें सीखने के लिए कम्युनिटी में प्रैक्टिस करना, कम्युनिटी में काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपको बहुत सिंसियरली वो पोस्टिंग करनी चाहिए जो आपको इस प्रोग्राम के साथ एसोसिएटेड है। ये अब डॉक्टर पांडे ने जो मुझे रिक्वेस्ट किया था कि कुछ ऐसे कोर्सेज़ के बारे में भी मैं बताऊं जो सिर्फ डॉक्टर्स या नर्सेज के लिए नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता आज ऐसे होंगे जो लोग ना तो डॉक्टर होंगे ना नर्स होंगे, लेकिन फिर भी हेल्थ से जुड़े हुए कई सारे कोर्सेज करना चाहेंगे। जी, जैसे सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड है या हाँ सर्टिफिकेट मैं प्रोग्राम इन योगा है, उन सब पे आऊँगी। एक सबसे पहले हमारा डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ मैनेजमेंट है। पहले ये प्रोग्राम हमारा सिर्फ कोई भी हेल्थ फंक्शनरी जैसे नर्स हो या डॉक्टर हो को ओपन होता था, लेकिन अब हमने किसी भी ग्रेजुएट को इसको ओपन कर दिया है और बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि ये एक ऐसा स्किल है जो भी कोई भी सीख सकता है और फिर एक हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर के लिए अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके लिए हम ऑनलाइन क्लासेस देते हैं और फेस टू फेस ट्रेनिंग भी लर्नर सपोर्ट सेंटर में की जाती है।
एडोलेसेंट हेल्थ काउंसलिंग भी कोई भी ग्रेजुएट कर सकता है, लेकिन ये एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप एक टीचर हैं तो आप जानते होंगे कि एडोलेसेंट फेज़ एक ऐसा फेज़ है जो कि बहुत सेंसिटिव फेज़ होता है। बच्चों के अंदर क्या चल रहा होता है समझना और उनकी जो सारी अंदर की प्रॉब्लम्स हैं उनको जांचना, डिटेक्ट करना और फिर उनका सल्यूशन ढूंढना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि एक ऐसी फेज़ है, ऐसी अवस्था है ज़िंदगी में जब आदमी ना तो एक बच्चा होता है, तो हर एडल्ट या टीचर या पेरेंट उससे ये एक्सपेक्ट करता है कि ये अब बड़ा हो गया है और इसको एक बड़े के जैसे बिहेव करना चाहिए। लेकिन वही एडोलेसेंट जब एक बड़े के जैसे बिहेव करता है, आपके साथ तर्क करता है, आपकी डिसीजंस में पार्ट लेना चाहता है और आपको क्वेश्चन करता है, तब आप उसको ये बोलते हैं कि नहीं बेटा अभी आप बच्चे हो। तो ये उसके अंदर भी असमंजस की जो स्थिति पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं, ना फिजिकल बट बहुत सारे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आते हैं। उनको डिटेक्ट करना, उनको डील करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमने ये एक कोर्स निकाला है। तो ये बहुत ज़रूरी कोर्स है, कोई ज़रूरी नहीं है सिर्फ टीचर्स करें। अगर आप एक पेरेंट हैं तो भी आप कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप अपने बच्चों के बारे में सीख सकेंगे और एक अच्छी पेरेंटिंग कर सकेंगे। फिर हमारी सर्टिफिकेट इन हेल्थ केयर वेस्ट मैनेजमेंट है, जो कि उन लोगों के लिए है जो नॉर्मली हेल्थ केयर में एसोसिएटेड हों, काम कर रहे हों, क्योंकि कैसे इतना जो बायोमेडिकल वेस्ट जो हेल्थ के इम्यूनाइजेशन है, रिसर्च है, ट्रीटमेंट है, उन सब में जो जनरेट होता है, अगर हम उसको नहीं ट्रीट करेंगे, नहीं मैनेज करेंगे तो बहुत इन्फेक्शंस फैल सकती हैं। लेकिन ये भी हमने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है किसी भी एक हेल्थ फंक्शनरी को, कोई भी 10+2 का आदमी इसको कर सकता है, क्योंकि आजकल इतने सारे लोग अपने नियर एंड डियर वंस को घर में ही मैनेज करते हैं। किसी को स्ट्रोक हो गया, किसी को कैंसर हो गया, वहाँ पे भी बहुत सारा वेस्ट मैनेज हो रहा है। तो कैसे इसको मैनेज करना है ताकि आपको वो इन्फेक्शन ना हो, वो करना ज़रूरी है। बहुत सारे इंजीनियर्स भी इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि कैसे मैनेज होता है उसमें बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं और उनके लिए बेनिफिशियल है। नाउ कमिंग टू द मोर पॉपुलर कोर्सेज जो पांडे जी जिनकी इंतज़ार कर रहे थे, तो सबसे हमारा बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है जो इंटरनेशनली भी अब इंडिया की तरफ देखते हुए सारी विश्व में लोग योगा के पीछे पड़ गए हैं। तो हमारा एक सर्टिफिकेट इन योगा प्रोग्राम है जो हम सिर्फ 10+2 के लिए हमने रखा है। कोई भी उसमें कर सकता है। उसमें हमारा फेस टू फेस ट्रेनिंग है, जिसमें बहुत सारे हम लोग योगा के आसन सिखाते हैं और ये भी बताते हैं कि उस योगासन से हेल्थ में कैसे इफ़ेक्ट कर सकता है, आप कौन सी बीमारियों को प्रिवेंट कर सकते हैं कि आपको ना हो, और अगर हैं तो उनको कैसे आप मैनेज कर सकते हैं कि आपको दवाई की ज़रूरत ना हो या आपको डिसेबिलिटी ना हो जाए और वो कंट्रोल में रख सकें आप। कई बार बीमारी ठीक करने में या उसको जो शुरुआत में बीमारी है जिसमें आप ऑलरेडी मेडिसिन में फंस गए हैं, उसको ठीक करना तो नहीं पॉसिबल, लेकिन उसको मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन जो शुरू में शुरुआत हुई है उसको आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारियां जैसे कि मेंटल टेंशन की है, हार्ट डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, काफ़ी हद तक आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हमारा सर्टिफिकेट इन होम बेस्ड हेल्थ केयर है जो डॉक्टर पांडे भी बोल रहे थे और हमारे स्टूडेंट ने भी बोला। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और मैं चाहूँगी कि आप में से बहुत सारे लोगों को इसमें ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये कभी ना कभी आपके ज़रूर काम आएगा। और इसमें आप अपने लिए भी आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें भी कैसे आप इसमें कर सकते हैं घर में रहते हुए, वो बहुत यूज़फुल रहेगा। इसमें भी हमने ऑनलाइन एक्टिविटीज़ करी हैं, ऑनलाइन में ही हमने सुपरवाइज्ड एक्टिविटीज़ भी करी हैं और कुछ फेस टू फेस रखी हैं जो आप आकर सेंटर्स में सीख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रुचिका कुबा। आज आपने इतने विस्तार से हमारे स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज जो इग्नू का है, इसके सभी शैक्षिक कार्यक्रमों के बारे में इतना विस्तार से जानकारी दी। हमारे सभी श्रोताओं के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध हुआ होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आज जिस तरीके से प्रश्न थे श्रोताओं की तरफ से, उससे पता लगता है कि निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा छात्र वर्ग इन शैक्षिक कार्यक्रमों के बारे में जानना चाहता है। और उसके बारे में फिर से मैं एक बार कह दूं, और वो ये कि सभी छात्र हमारे इग्नू की वेबसाइट को ज़रूर देखें। हमारी वेबसाइट में हमारा सारा कोर्स मटेरियल, हमारे डिटेल्ड सिलेबस, हमारे पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर्स, या सभी जानकारी हमारी वेबसाइट में, इवन ऑडियो विजुअल्स सारी वेबसाइट में उपलब्ध है। आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें
और इतना ही नहीं, हमारा जो ई ज्ञान कोश है उस ई ज्ञान कोश को भी विज़िट करें, जो कि हमारी वेबसाइट में उसका लिंक दिया है। वहाँ से आपको समस्त जानकारी प्राप्त हो जाएगी। फिर भी आपके दिमाग में यदि ऐसा कोई प्रश्न हो जो आप विस्तार से जानना चाहते हो, तो आप हमारे सभी सूचना प्रदान करने के जो सारा राष्ट्रव्यापी हमारा नेटवर्क है, आप कभी किसी भी अध्ययन केंद्र से संपर्क स्थापित करें या रीजनल सेंटर से संपर्क स्थापित करें, हम सहर्ष आपके लिए उपलब्ध होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी श्रोतागणों को एक बार फिर धन्यवाद देना चाहूँगा और विश्वास करता हूँ कि हर हफ्ते 3 से 4 बजे जो क्षेत्रीय सेवा प्रभाग का ये कार्यक्रम प्रसारित होता है, इसमें आप अवश्य भाग लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रुचिका कुबा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
Hello, students. Today, I'm going to discuss this topic, Women and Indian Politics, which is part of the course, Women and Political Process. The course code is MWG 010. This is a second year specialization of the Women's Studies of the MA in Women's and Gender Studies. I think it's very important to understand why do we need to understand this particular theme in order to understand women in political process, as we see that historically, the category of the woman is always been oppressed, and you see that as a result, the patriarchy, the ways in which it operates, not only in the Indian scenario, but of course in cutting across the globe, we see that the patriarchy, which sort of dismantles, bring out the inequality. There's a sort of disorder in the system, and as a result, we see that women are into in sort of political process coming down and coming up these issues. I think it's been important to understand again that how do we look at this kind of debates. For instance, when we look at that, in Indian democracy, that election is something which takes it, into a political processes to all of us, and we do have the Election Commission of India. So the election, in fact, offers the best chance to ensure that women's voices should be taken into consideration, and we need to hear them more and more. And as a result, that the political parties participate, do invite the women into several domains, and of course one would understand their potential contribution to peace and democracy. And as a result, we see that how it has been capitalized. Now, if you look at the data, out of 188 countries classified by descending order to the percentage of the women in the lower or single houses, and this I'm quoting, in fact, 2011 data, India stood as a 99th position during that time. And if you look at, historically the first election, and today you see in 2019, eventually we entered and we have gained so much. So if you look at, sort of the data which we could analyze, 2014 before and 2014 and 2019 election, you see the results are different. Now, for instance, 2014, much before 2014, you would see that the 17th of this, elections which took place, and around you see that when one could see that the ways in which that India stood as a 30th, and if you look at our neighboring country during that time, it was 26th ranking, which was Afghanistan and Iraq, but then eventually there's a downfall of the Afghanistan, and you see that today in 2019 election, and specifically I wanted to say here that 2019 election, which in terms of the woman into Indian politics, there are several categories to map out, like for instance, the representation of women, voting patterns, how women are voting, because women are the one who are participating in the voting process. And you would see that 2019 is amazing data. If you look at the Election Commission of India and analyze the data, you would categorically see that it is an equal participation. But I think that we need to also understand that the 50th Lok Sabha election, which was held in 2009, because I wanted you to reflect from the first election till now, so far, the 2019 election, in order to understand the sequence, that how these developments are happening, and how much women struggled also. Of course, the parliamentary democracy has contributed so much, in order to place them,
So one would see that if we look at the 50th Lok Sabha election, which was held in 2009, and which delivered in fact a record 59 women as a member of the parliament, the highest since independence during that time, and participation during that time was 10.9%. Now, if you look at 2014 election data, you would see that it's a 14%, increasing number of the women representative elected, and which is again gradually increasing if we look at, at Lok Sabha, Rajya Sabha level, at also at the Panchayati level, at also at the municipal level. So one need to understand this dynamics very categorically, and then you would see that in 1937 the election commission, this is a particularly law which we must know it, that the Government of India, Act, which was there, which brought out the reservation for women. And you would see that eventually the 80 women were elected to power. The truth is that there is no adequate representation of women in social, economic and political life of the country, even after over 6 decades of independence during that time. So through, we can make their presence felt in many, male-dominated profession. The representation is there in decision-making bodies, processes is so far than that of the men. So there have been a historical, social exclusion of women, which I already mentioned in the beginning, from polity due to the various social and cultural reasons and the patriarchal tradition. And I think today, as I mentioned to you, that the number of the women representatives are increasing in terms of the voting pattern, also the increasing in terms of representation. It's also been a very big achievement in some sense. Women play, sort of double role in, election politics as a voters, as a political representative. The participatory trends of the women in elections are described as under the Constitution of India guarantees equal rights to men and women as voters and citizens, and women, particularly women are someone who are influential vote bank that political parties can sort of ill afford to ignore, as there now is about 342 million registered women voters, and it's increased in fact if you look at most recent data. And because earlier it was 376 million male voters. Now it's an equal number which you could see eventually, because of the number of policies which have been introduced by, each parties and the governments. And it's been very important to understand that how do we call it, the political literacy. I mean, this is again been a question which we need to, sort of understand in terms of, the constitutional rights, which has been guaranteed to all of us by the Constitution, and particularly in terms of the gender. So in all this election held since independence, women had a voting rights, and the political parties who approach women very often for the party issues easily mobilize women in political processes. They also fulfill short-term goals by winning election. However, they are mostly unable to fulfill long-term goals of bringing about social change and gender equality in political power sharing. And this is something which is a very important point which we need to understand, because the gender equality and sort of political power sharing, which again been very important, because the moment women enter into politics, the gaze particularly of the society, or the kind of constructions society carries, it remains very, very important to sort of, to tease out that, because the patriarchal society sees women candidate into election in a certain way. And we need to then further understand the higher participation of the women in the recent years also, sort of contingent on the mobilization
efforts made by the political parties, non-governmental organization, action groups, and the general awareness among the community of the importance of the woman exercising their franchise. Again, a note of the caution is required here is that lest it will be assumed that political participation always sort of indicates political awareness on the part of the woman voter. I just wanted to flag here some of the important things. As I mentioned here, that the role of the political parties and the other actors like NGOs or the action groups. You would see that in the contemporary context, if you analyze and take an example of the latest states who sort of win the election, whether it's a question of the UP or take an example of the Punjab or the other states, it's not about the matter, the ways in which the political party, sort of highlighting the women's issues and what woman needs particularly. Like for instance, that, one of the important, policies which we would see and analyze is the Ujjwala gas scheme. And I think the women from the downtrodden community accepted that, and there's a constantly, a sort of engagement which political parties are trying to do it. And here, I just wanted to mention that what women needs is that, because if you look at the health issue, because it's not only the, a one scheme or the policy which brings out a change in the life of women, but it has a correlation with the health and other issue which also makes them to sort of free from the other kind of problems. So many political parties are sort of trying to bring out their manifesto with center focus sometime on the women's issues. At the same time, the countries that do not hold regular election show an improved recognition of the woman as a political constituencies, and parties and candidates tend to adopt pro-woman stance and appeal specifically to women as a votes, women votes, and especially in the time of election. And this phenomena you can, sort of relate and try to understand in the neighboring countries also, where, for instance, in the beginning when I mentioned about Afghanistan, I think that when, the complete Afghanistan was collapsed, it was very important the women activists and the women politicians who, previously was there, who brought out this issue that what would be the future of the countries, because it's a woman who, sort of bring help to make it a democracy in a peaceful manner. So women are of course been a part of the political process which we need to understand categorically. So therefore then this becomes very evident when we look at consecutive elections, and wherein we could see that the growing consciousness which is there, in which the women voters need to pay attention to the need and issues of the women in the election manifesto of the political parties. And you would see that since the independence, due to the excesses of their franchise, the Indian women have been exposed to the political processes. And I think this is again an important take, because we know that unlike the West, we did not struggle like almost been 100 years of the struggle where white woman or the Western woman or even the blacks or the slavery system was there, where children also part of that movement during that time in West, and they eventually make a claim and they fought for their rights, voting rights also, which we call it. So in fact we do have the representation of women in which engages us into these debates, of course, during the British period,
And it's a number of women who went and participated in, and we do have the first 3 conferences and the women's 3 organization which were very active in the during India's independence time to be part of this process. But of course we did not struggle the ways in which the Western community struggled for this kind of rights. So as a result, you see that the increasing awareness is always there in terms of the rights and their utility, and the majority of the literate rural women are also politically sensitive and aware of the various issues confronting them. Now, if you look at 2019, the electoral rolls, women voters are majorly in the 6 states, which is Andhra Pradesh, Kerala, Manipur, Meghalaya, Mizoram, and Puducherry. But today the situation has changed. It's if you look at the other parts also, the states like Bihar, Jharkhand, or Rajasthan, it's the number of the women are increasing. For Uttaranchal. So you would see the equal kind of representation of women voters you would see in order to understand. And at the same time, that if you look at the debate, the ways in which one is engaging with, as I mentioned to you, the policy and the national campaign, which is there, Beti Bachao Beti Padhao, which is there. This also brought out the sort of changes in order to understand the political manifestation of the parties, which one would understand through this. Now, one should also look at that woman as a contestant. Through voting, it is an important indicator of the political participation and the mobilization. It's not necessary to be inductive of the representation, or voting is simply a tool of political equality. It mobilizes women, but voting by itself does not result into desired end of equality. So we need to understand that voting can bring out change, but it is not going to bring out a drastic change the ways in which we want a society which treats each one of us equal. So in fact there is a definite gender bias in the selection of the woman candidate for the election in India. And over the years, very few women candidates have been, there in the Lok Sabha election, and most of the women fighting election belong to the established political families, or one would call it a proxy candidate. So while selecting the candidate, the political parties went strong and established, leaders. And I think that we need to revisit again and again this debate, as the fact of the matter is that, yes, it is a truth that most established political families, most of the women do contest from those families. So the tickets are given to the woman who exceptionally strong, and then who can bring out a change, and there's a surety that they are the one who are going to go and win those seats. So another astonishing fact is that out of the number of women who actually contest the election, the percentage of the women who finally make it to the Lok Sabha is very less. If we bring out this debate and visit way back, you will see that the scenario is again changing. Most of them who are coming in 2014 and 2019 elections, you would see that the women legislature, they are in fact coming from a different sort of position and location, and then changing. So one can see that the ways in which the political parties are sort of acting and sort of bringing out a sort of change into that also. And this is, I would say, that phenomenal, because it's not only the major parties, the umbrella parties like BJP or the Congress, it's also the regional parties which are also bringing out some sort of changes into while distributing tickets to the woman candidate. But of course that bias remains, and you would see that there is no
denying the fact that the political party is an authentic institutional voice in the democracy and the multi-party system. Democracy such as India, the role of the political parties in the election, which is again very significant, and the mobilizing the public opinion and also the governance process cannot be, overemphasized. So we need to understand this, and then therefore that, the political party for the, this kind of success of the candidates and the elections are imperative. So this trend was evident when women contestants are there and filled by the national parties, when in larger number of the comparison to those belonging to the state level parties, and including the registered parties and the independent candidates. Now let me quickly also say to you that women's representation in the parliament, which is increasing, but the real question which needs to ask is that how it is helping us to eradicate the patriarchy in the society, which I want all the students to think about it very seriously, because the ways in which the socio-cultural actors plays an important role in order to understand the position of the woman and the political parties. There are a number of barriers women participants face, in fact, when they contest the election. So there are various reasons as why women do participate in sort of electoral politics in large numbers, or and encouraged to take part in the election as a contestant. So the main reason for that low political participation of women in the electoral politics is the patriarchal structure in the Indian society. So it's generally accepted by the majority of the women, both men and women, that women's role is at home. And even today, because this is not something that today it has changed, but it's, if you look at even historically or the freedom struggle again, you would see that most of the leading people, for instance, such as unknown people who contributed for India's freedom, their attitude and their approach, women entering into politics, was very narrow. For instance, we all of us knows that Sarojini Naidu, but the kind of take she took it during that time, because what she argued also is that if women are going to be get into the politics, who would take care of the home and the children? So these matters become very complicated, as you see that women are, by their choice, are not going to go and enter into the sort of politics. And Indian politics, of course, is changing, and I would recommend that a couple of very interesting books are recently published in 2021 and 22. One is by the Sanjay Kumar, which is talking about women voters, the changing scenario, which he's trying to discuss, which is by Routledge. And the other one is by Mukulika Banerjee, in which that why India votes. She's trying to figure out and argue that why the participation of the women voters and also the male voters are increased, and what are the ways in which. So it maps out, in fact, each state, and in which that the argument which has been put forward by them, that how do we understand the women who are part of the Indian politics, in order to sort of bring out the change. Are they something are they bringing out a change in the country, or are they something a part of the democracy which is sort of asking the respective political parties that, look, this is what we need. And I would end with here one of the note, like for instance, that if we map out some of the policy, for instance, anti-Arak movement, which was there in Telangana, or even if you take at the most recent examples from sort of a state like Bihar, where women were very happy in order to understand when certain governments took the initiative, which because it
sort of bring out a peace to their home, and it of course bring out the changes in their lives. So the effort through this lecture was that to bring out, and I think that we need to also understand the role of media, the ways in which that women contestant, women political parties, women participating in the political parties, in the democracy, and also in the voting pattern, how it is changing. So I'm sure that in order to understand the debate, you will look forward and try to also analyze the data, which by bringing out the government sides, and to understand and acquire more knowledge in order to understand women in Indian politics. Thank you. We all use honey in our everyday life. Normally we buy honey from market, but we don't know the quality of the honey. So we can judge the quality of the honey, whether it is pure or it is adulterated with sugar solution. We can do a simple test at home, and you can judge whether the honey is pure or adulterated. For this test, we have to take a glass of water. Now we'll add a spoon of honey. Here you can see the honey is going to the bottom and it is not getting dissolved in the water. So this is pure honey. Now we'll take another glass of water and I'll add another sample of honey. Here you can see honey is getting dissolved in the water. That means this is not pure. This is adulterated with sugar solution. So this is a very simple test to judge whether the honey is pure or adulterated. We all use sugar daily, but we don't know the quality of the sugar, whether it is pure or it is adulterated with chalk powder or something like that. So we can do a simple test at home and you can see whether it is pure or not. So for this test, we need a glass of water. I'll put sugar powder in a glass of water and mix it well. If there is no sediment, if the solution is clear, then we know that this is a pure sugar sample. So here you can see the clear solution. That means the sugar is pure. Now we'll take another glass of water and we'll put another sample. Now you can see the sugar is not getting dissolved. That means there is impurity. The sugar is adulterated with chalk powder. You can see the turbidity. The solution is not clear. And if we keep it for some time, the chalk powder will settle down at the bottom. So you can see the sediment. Hello learners, welcome to this live teleconferencing session. Today we are going to discuss the topic that is state as an agency of education. Before starting our discussion, let me to introduce myself. I, Dr. Niradhar De, faculty member,
School of Education, Indira Gandhi National Open University. Welcome you all to this teleconferencing session. Friends, today we are going to discuss the topic that is state as an agency of education, and this topic has been taken from one of your discipline specific core courses under BAG program, which is developed as per the choice based credit system of UGC as per the CBCS system. The course code is BESC 131 and course title is Education, Concept, Nature and Perspectives. I have already said that this course is one of the core courses under your BA Journal program as per which is developed as per the CBCS system. Before starting our discussion, let me to focus upon some of the important lessons that are included in the third unit of your course, of this course. The title of the unit is Agencies of Education, and in this unit 4 important lessons are there. They are just like family as an agency of education, school as an agency of education, then community and media as agencies of education, then further state as an agency of education. We have already discussed 3 earlier lessons in our earlier teleconferencing sessions, and today we are going to discuss the 4th lesson from this unit, that is state as an agency of education. Let us go forward to focus upon some of the learning outcomes, and I am very much hopeful that after going through this lesson, this teleconferencing session, as well as the part content that you have studied from your course, you will be able to explain the concept of state as an agency of education. Then you will be able to describe the role of state for the education of the child, and you will be able to discuss the interface between and among the agencies of education. Now let us go forward. Friends, if I will classify the agencies of education, I can say that it may be in 2 categories, just like active agency of education, then passive agency of education. Under active agency of education, I can further categorize just like school as an active agency, family, community, religion, state, social club, games, entertainment programs, etc. are the active agency of education, because when we go through all these agencies, we actively involve ourselves in doing the discourses, in interacting with the people, in interacting with media, and at the same time we also learn many things. So that's why it's called as the active agency of education. And further, under passive agency of education, we can make a list just like cinema, television, radio, newspaper, magazine, marketplace, and many other passive agency of educations are there. So today we are going to discuss one of the active agency, that is the state. Let us go forward. Friends, first try to understand the very concept of state as an agency of education, and we will be discussing that what is the role of the state for the development of education, what really the state does. So friends, to focus upon some of the very important points, I can say that state is an organized political community with government recognized by people. So state is a you can say type of government, and it is the responsibility of the government to provide education to the citizens. If I will give the example of Right to Education Act, RTE Act, so who takes the responsibility to provide compulsory elementary education up to class 8 to each and every citizen, to each and every child of our country? So it is the government. It may be the central government, it may be the state government. So friends, when I am saying state as an agency of education, it doesn't mean that only the state government. Rather, I am just aiming to the government. So here, government as an agency of education. So government takes the responsibility, government develop the policy, and according to the policy,
different schemes, different projects, different state governments, they initiate in their state for implementing the policies. So to go forward, let me to focus upon some of the other important points, just like role of state is for the overall development of its citizens. It is the responsibility of the state. It includes education of the citizen, health, infrastructure, economy, and other socio-cultural aspects. At the same time, state also ensures that all children, irrespective of caste, creed, religion, socio-economic backgrounds, etc., have access to educational facilities. So, irrespective of caste, creed, and color, irrespective of gender, state provide a type of equity and equality in education. Further, next point, this has been focused that it is the responsibility of the state to provide equal opportunity and to achieve equity and equality in education. Okay, only achieving equality is not enough. Rather, with achieving equality, it is the responsibility of the state to achieve equity also. So, states should ensure that the education facility that we provide to the nation, that we provide to our citizens, whether all are getting it in a same standard or not. So, many a time, because of we know that no two individuals in this world are alike and same, so far as their mental ability is concerned, so far as their attitude is concerned, so far as their other, you can say, attributes and other parameters are concerned. So, that is why if we consider each and every individual are equal, just like in the inclusive setting of schooling, what we do in the inclusive setting of schooling, we have a set of curriculum, we have a syllabi and teaching learning process that we conduct in the school, and all students, irrespective of their ability, irrespective of their religion, of their gender, of their caste, they sit together. Okay, and we provide a similar types of instruction to them. And many a time you must have observed that it is not possible to provide equal education to all, because you will find a group of learners in your class, they receive education, they receive knowledge, and they understand the concept immediately when you are delivering a lecture. But many a time you will find that another group of learners in your class, they are taking time because of diversity in their mental abilities, because of diversities in other aspects also. So, for them, what you have to do? So, for them, you have to use different methods, you have to use different techniques, and your strategies should be different. Okay, the tools and techniques that you are using to teach your students, that should not be in one scale, that should not be you can say a single type of test or the tools. Rather, varieties of tools and techniques should be used, so that as per their need, as per their ability, they can do this. So, it is the responsibility of the state, mostly in a democratic country like ours, to achieve equality and at the same time to achieve equity. Now, let us go forward to understand the other aspect of state agencies of education. Just like here on your screen now it is visible. You see, in the hierarchy of school management, state occupies the top position to exercise its control over the education system in the country. So, state occupies the highest position in the hierarchy, and in the lower position at the grassroots, that is the school. That means education at the school is the first step, you can say it is at the grassroots level, and further education at the block level. We have the BRC, we have the CRC. At the block level, we will find that block resource centers are there, cluster schools are there, and cluster resource centers are there. And at the district level, you will find that education administrators are there. It may be district education officer. They take care and they administer the education system of the district. And above that, that is the education at the state level. So, that is why in the hierarchy of education, so far as its administration is concerned, we can say that it starts from the school, then the schools are included in the blocks,
And further, the implementation of education by the block, that was being controlled by the district, and further the overall control is on the state. It may be the central government or it may be the state government. So this is the hierarchy. And for transforming education and for implementing education, implementing different schemes, different policies and different projects, you will find that it is just like a flow. It is just like a hierarchical flow. Means the scheme will initiate by the government, and further the scheme will be implemented at the school through the district education department, at the same time with the block education department. Now let us go forward to understand the very role of state for the education of the child. Just like here, what state does, I have already said that it develops education policy. Just like I can take the example of NEP 2020, National Education Policy 2020, which is implemented in India, that is from 29th July 2020 onwards. Okay, so who develops, who notified this policy, this NEP 2020? It is all about the responsibility of the state, responsibility of the concerned government. Okay, so that's why developing the policy is not the work of the school. School may be a stakeholder, parents may be the stakeholder, children may be the stakeholder, but the responsibility is with the state. So that's why we say that state is one of the very active agency of education. State control the school education system, state also control the higher education system, technical and professional education system. So that's why initiating a policy, notifying a policy, working on the policy and notifying the policy is the work of the state. And further, it involves stakeholders for implementation of the policy. It involves, I have already said that stakeholders, you can take the example of parents, you can take the example of the students, you can take the example of the teachers, you can take the example of the community member, the local government. So state does, it includes the stakeholders in the process of education, in the system of education, because the success of education system is not possible unless we actively involve all the stakeholders in the system. Okay, because there is the contribution of parents are there is the contribution of teachers, there is the contribution of students. And if I will give the example of School Management Committee, SMC, which is one of the, you can say, very pertinent, very important recommendation of Right to Education Act 2009. So here in Right to Education Act 2009, this has been recommended that every school will have one SMC. That's called as the School Management Committee. So what will be the work of the School Management Committee? School Management Committee will take care of the school, and the School Management Committee will supervise the school, and with the overall supervision of the committee, the developmental activities of the school will be undertaken. So that's why, friends, in School Management Committee, if you go through the documents, you will find that the members of SMC are the parents, members of the SMC are the teachers, are the local government, are the community members. So that's why unless we include, unless we make, unless we reach at the stakeholders, we shouldn't, you can say, expect that the success of education will get. And further, it prepares plans and programs of education at different stages, such as school education, higher education, teacher education, technical and professional education. And another important thing, I have already said that it is the responsibility of the state to initiate, to work and to notify the policies. Just like here, I am just giving example of 4 different policies. Just like the Secondary Education Commission 1950 to 53, then Education Policy 1964-66, the National Policy on Education, that's called as NPE 1986, and the recent education policy, that's called as National Education Policy NEP 2020. In these 4 policies, you will find that the first policy, that is the Secondary Education Policy, it is based upon
only the development or the matters relating to school education. But if I will focus upon another 3 policies, that is Education Policy 1964-66, that's called as the Kothari Commission, and further National Policy on Education NPE 1986, and National Education Policy NEP 2020. It includes school education, higher education, technical education, teacher education, and professional education. Okay, it discusses and it recommends that what should be the system of education in our country. If I will give the example of NPE 1986, that is National Policy on Education 1986, I can give the example that the system of education, that's called as 10 plus 2 plus 3 system of education. 10 years of school education, then for the 2 years of higher secondary education, and for the 3 years of you can say degree education. Okay, so it was the policy, it was the system as per NPE 1986. But now as per NEP 2020, National Education Policy 2020, there is a change in education system so far as school education is concerned. Now it is the system that's called as 5 plus 3 plus 3 plus 4 system of education. Okay, so that means 5 years of foundational stage of education, then 3 years of preparatory education, then 3 years of middle stage education, and 4 years of you can say secondary education, that includes class 9th, 10th, 11th, and 12th. So higher secondary is included in the secondary stage of education. So it is the responsibility of the state that how state control education system in the country. So time and again, with the passage of time, with the changes that is occurred nationally at the same time globally, so far as education system is concerned, so far as curriculum and syllabi is concerned, and so far as knowledge system is concerned, so far as theorization is concerned. So accordingly, new policies should come in a proper time, and it should be implemented wholeheartedly or in a very true spirit. So that's why it is the responsibility of the state. Now we are undergoing with the process of implementing the NEP 2020, National Education Policy 2020. Across the country, you will find that discussion has started, and most of the recommendations that are being implemented, and many institutions and organizations, and they have also started implementing different aspects, different implementations of NEP 2020. So it is the responsibility of the state. And further, very briefly, let me to focus upon some of the important aspects, just like implementation of education policy. So how we implement education policy. Let me to give few examples, just like here, to focus upon Right to Education Act 2009, I can say that the major objectives of Right to Education Act 2009 is to provide the right to the children to get free and compulsory elementary education up to the age 6 to 14, that is from class 1 to class 8th. Then it is the responsibility of the state. Further, if I will discuss the main objectives of education scheme, that is the midday meal scheme. This is the objective is to enhance enrollment, retention, attendance, and simultaneously to improve the nutritional status of the children. So by adopting, by implementing the midday meal scheme, how we increase the retention of the learners, how we increase the attendance. Okay, so how to reduce the wastage and stagnation in the system of education. So I think we have achieved a lot by implementing the midday meal scheme in our country. And further, let me to give example of some of the other education schemes, just like Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya. Its objective is to provide the upper primary schools residential facilities for the girls from SC, ST, OBC and Muslim communities for the development of education of the deprived groups of the society, just like the scheduled caste, scheduled tribe, other backward community class and the Muslim communities. And another scheme that's called as the National Bal Bhavan, its objective is to provide
opportunity to the children for enhancing their creativity through creative art, writing, performance, physical education, scientific innovation, photography, etc. in a very joyful environment. And further, another important scheme that's called as RMSA, Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan. So let me to focus upon what is the main objective of RMSA. Main objective of RMSA is to enhance the enrollment at secondary stage by providing a secondary school within a reasonable distance of habitation and with an aim to ensure gross enrollment ratio that's called as the GER of 100% by 2017 and universal retention by 2020. Then further, another objective of RMSA is to improve quality of education imparted at secondary level. So friends, the GER at the higher education and GER at the school education, our target is to achieve 100% GER in school education. So because of that, the government of this country, they come forward with many schemes, they come forward with many projects, and at the same time it also equally applicable at the higher education. Okay. Next, further, another example I will give, that's called as the UDAN, which was implemented in 2014. The main objective of UDAN is to address the quality gap between school education and engineering entrance by addressing 3 dimensions of education, that is curriculum design, transaction and assessment. Further, to enrich and enhance teaching and learning of science and mathematics at senior secondary level. And the another objective of UDAN is to provide a platform that empowers the girl students and provides better learning opportunities to them. So how to provide facilities especially to the girl child to come forward in different engineering and science based programs. Okay, and I'm dead sure that now if you take the statistics, girls are equally parallelly doing well like the boys. Further, very briefly, just to touch upon the important points about the role of state for education of the child, just like it provides provision for schools, it establishes school for education of the child, then it also appoints the teachers in the schools, and it also develops adult and lifelong learning center, then it takes care of the finance of the schools, then printing of textbooks and study materials, it also state also take the responsibility and provide books to the students, then provision of scholarship. You will find that many states, they provide scholarship to the students. Then coordination between school and community. It is the state that coordinate between school and community, because the success of the school is only possible when the community is wholeheartedly and with a spirit come contact and work for the development of the school system. And now let me to focus upon interface between and among the agencies of education. We have already discussed in this unit about school as an agency, home as an agency, community as an agency, state as an agency, and media as an agency. So here many a time you can't say that all the agencies are independent, rather they are dependent with each other. Okay, the school depends upon the community, at the same time community also depends upon the school, and for the school and community that depends upon the state. Okay, and the state is also equally depends upon the community. Okay, so accordingly we can say that all the agencies are related, associated with each other, and they interface with each other. And we are at the you can say now concluding stage of our presentation today. Now let me to recapitulate and focus upon some of the important questions, and I'm sure that now you are at a position to answer these questions. I'm just focusing the question, just like why state is an important agency of education, explain the role of state as an agency of education, and further explain the implementation strategies of educational policies by the state as an agency of education, then how different agencies of education interface between and among themselves. So friends, in our next session we will discuss other aspect, other theme from your course. Thank you.